Assalamu alaikum. You are watching ELT streaming. This is Fazia Saeed. Our today's session is about language skills. Most of you in your life struggle to achieve success by speaking English, and you struggle a lot for improving your spoken English. हम सब उस पे लगे हुए होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो ये समझते हैं कि अगर उनको स्पोकन इंग्लिश अच्छी आ जाएगी तो वो उनकी जो तरक्की की राहें हैं, चाहे वो एकेडमिक है चाहे प्रोफेशनल है, तो वो उसको अचीव कर लेंगे और काफी हद तक ऐसा होता भी है। सो आज हम बात करेंगे लैंग्वेज स्किल्स के बारे में कि क्या खाली स्पोकन इंग्लिश ही आपकी इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है या कोई और भी स्किल्स ऐसी हैं जिनको अचीव करने से आपकी सेकंड लैंग्वेज परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। तो हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। In today's session, I am going to discuss the 4 basic skills of English language by which you can improve your communication skills. So these skills are listening, reading, speaking, and writing. So first of all, we will look at the definition of English language skills. English language skills refer to the abilities needed to communicate effectively in second language. Second language means English, as you have your mother language, Urdu, Punjabi, or any regional language, and you are learning English for different purposes. So English is the second language for you people. Now come to these skills. Listening and reading are called receptive skills that you receive information in these skills. जब आप सुनते हैं, आप पढ़ते हैं, तो आपके अंदर इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब होती है, तो आप रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन. स्पीकिंग एंड राइटिंग, these are the productive skills that you speak or write something by your own vocabulary, grammar items and all. तो ये आप एक प्रोडक्शन आप प्रोड्यूस करते हैं कुछ, तो इसलिए ये प्रोडक्टिव स्किल्स है. तो ये तो हो गई 4 स्किल्स. Now we will look into these 4 skills one by one, that why these are important and how you can improve your English language skills for better communication in your daily life or in your academic or professional life. Okay. Now, listening skill. Listening is the ability to understand and comprehend spoken English text or speech. This involves paying attention to the speaker, interpreting their words and understanding their intended meaning. तो जो सुनने की आपकी सलाहियत है, the ability to hear and understand someone who is saying something in English is called listening. सुनने की सलाहियत. आपने देखा होगा जब बच्चे बोलना शुरू करते हैं तो वो पहले सुनते हैं और जैसे वो वर्ड्स सुनते हैं वो बोलते हैं. सेम इज द केस व्हेन यू आर गोइंग टू लर्न अदर लैंग्वेज, इंग्लिश है, चाइनीज है, कोई भी, तो आप जितना सुनते हैं उतना ही आप उसको समझना शुरू कर देते हैं एंड देन यू स्टार्ट स्पीकिंग बाय योरसेल्फ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लिसन केयरफुली एंड दिस स्किल इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग स्किल. क्या आपकी लिसनिंग स्किल ऐसी हो कि आप वर्ड्स को, प्रोनाउंसिएशन को और जो उनका इंटोनेशन पैटर्न है, बोलने का जो तरीका है, उसको आप देखें कैसे बोल रहे हैं. अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस व्हेन समवन इज स्पीकिंग टू यू हैव टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन. डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ इनटू अदर थिंग्स. सो यू हैव टू लिसन केयरफुली. Do not interrupt. When someone is speaking to you, you are not supposed to disturb or interrupt him or her, and you have to show empathy that you are going to understand what he or she wants to say. If you want to know something, you have to ask questions after it and clarify what other is saying to you. Then you are able to summarize the points which you have heard. And then you have to practice with patience. जितना आप सब्र के साथ बार बार लिसनिंग करेंगे उतनी आपकी लिसनिंग स्किल डेवलप होगी, आपको समझ आएगी और फिर आप अगले की बात तहम्मुल से सुन के अपनी बात उसको कह सकेंगे इन इंग्लिश.
This is about the listening skill. Now come to the other skill, that is the speaking skill. So listening, after listening, you are able to speak. What is the speaking skill? The ability to express oneself in English using appropriate grammar and vocabulary. This skill involves pronunciation, intonation, and clarity of your speech. So, speaking skill is very essential for communicating your ideas and your thoughts into words. So, when you are going to speak, first of all, you have to come into your mind. Who is your audience? So, you have to know your audience. कि आप जहाँ बोल रहे हैं उस वो ऑडियंस कौन है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर टॉकिंग टू अ स्टूडेंट हु इज 5 grade or belong to 7 or 6 grade higher secondary level, so you have to keep into your mind that you are speaking to those persons, और आपने उसके मुताबिक vocabulary और अपनी जो प्रोनाउंसिएशन और सारी चीजें हैं वो आपने उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे. ठीक है. सो यू हैव टू नो योर ऑडियंस. इफ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन सम कॉन्फ्रेंस, यू हैव टू स्पीक अकॉर्डिंगली. इफ यू आर delivering a speech, you have to act accordingly to choice of words, grammar and all these things you have. If you are talking informally, तो भी आप अपने हिसाब से वर्ड्स और वो बोलेंगे. एंड इफ यू आर स्पीकिंग इनटू फॉर्मल सिचुएशन, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पीच या अपनी स्पीकिंग जो है वो करेंगे इसके. सो यू हैव टू प्रैक्टिस फॉर इट. स्पीक क्लियरली विथ कॉन्फिडेंस. यूज स्टोरीज एंड एग्जाम्पल्स इफ यू आर गोइंग टू रेड समथिंग. Be authentic. Do not imitate or don't be a native like speaker in the beginning. So gradually you will be able to communicate effectively. ठीक है. उल्टे सीधे एक्सेंट बोलने और लफ्जों को तड़ोड़ मड़ोड़ के बोलना, ये लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कि मुझे इंग्लिश आती है, दैट इज नॉट गुड. So you should be authentic and real in your conversation. You have to listen what other is saying, and then you have to answer or speak accordingly. And then you have to get feedback. If you are going to deliver a speech or you are presenting something, you have to take the feedback for your improvement. ये थी आपकी speaking skill. Now come to the reading skill. So reading is passive skill, or you can say that you receive information in it. The ability to understand written English text is called the reading skill. This involves interpreting written words, sentences, and paragraphs and understanding their meaning. So these skills allow you to learn, communicate, and engage with the world around you. आपके इर्द गिर्द जब आप कोई भी बुक रीड करते हैं इंग्लिश में, तो आपको इर्द गिर्द आप कोई एक माहौल, आप नॉवेल पढ़ रहे हैं, आप प्ले पढ़ रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपने इर्द गिर्द एक माहौल बनाते हैं, और वो रीडिंग आपकी जो विजन है उसको ब्रॉड करती है. यू गेट मोर वोकैबुलरी, मोर ग्रामेटिकल आइटम्स, ग्रामर के रूल्स क्लियर होते हैं. सो यू हैव टू सेट अ पर्पस व्हाई यू वांट टू रीड. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेट अ purpose. If you are going to read for academic purposes, तो आपने उसके अकॉर्डिंग रीड करना है. इफ यू आर गोइंग टू रीड फॉर प्लेयर, तो आप उसके लिए, अगर आप अपने वैसे इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ आर्टिकल्स वगैरह पढ़ने हैं, तो आपको अपना जो पर्पस है फॉर रीडिंग को अपने दिमाग में रखना है. प्रिव्यू द मटेरियल. यू हैव टू रिव्यू और प्रिव्यू द मटेरियल विच यू आर गोइंग टू रीड. आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप एकेडमिक, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम, तो आप इधर उधर की चीजें नहीं पढ़ेंगे कि आपने ग्रामर अपनी इम्प्रूव करनी है या सेंटेंस स्ट्रक्चर्स चाहिए या आपको वोकैबुलरी चाहिए. यू हैव टू बी स्पेसिफिक विद द टेक्स्ट. यू हैव टू अंडरस्टैंड फॉर योर एग्जामिनेशन. यूज कॉन्टेक्स्ट क्लूज. When you are going to read, you have to use context clues. We will discuss these things into details in other video. So you have to practice active reading. For what purpose you are reading, and do you have the specific material for reading for that purpose? Then you have to note down the points and take your own notes, and then you can summarize what you have read for your
improvement of reading activity. And then you have to read regularly if you are going to improve your vocabulary, grammar, and your writing skill or your speaking skill. So you have to read regularly. Okay. Now come to the last one. This is the writing skill, the ability to communicate effectively and produce written English text with correct grammar, punctuation, and spelling. And you can affect communicating your ideas and information through words on the paper. Written expression के through जो आप अपनी thoughts हैं, ideas हैं, उनको communicate करते हैं, तो that is called writing skill. So you have to start writing with a clear purpose. आपका purpose क्या है? If you are going to write an essay for an exam, तो आपने उसको उसके according लिखना है. If you are going to write a creative story, so you have to write accordingly. If you are writing a formal letter, so you have to choose the pattern of letter and choice of words, and all the items should be to a formal letter or an informal letter. And you have to know your audience. If you're writing for player purposes, आप कोई creative novel लिख रहे हैं, तो आपको अपनी audience को देखना है कि वो कौन है, किन को आप कहना चाहते हैं. बिजनेस की कोई आप आर्टिकल लिख रहे हैं, वो आप देखेंगे. कोई एंटरटेनमेंट का लिख रहे हैं, तो आपको ऑडियंस के उसके चॉइस ऑफ वर्ड्स और जो है आपका पैटर्न और आइडियाज की कोहेरेंस वो उसके अकॉर्डिंग होगी. सो यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर आइडियाज अकॉर्डिंगली by knowing your audience and purpose. Use simple language. Always use simple language that the other person can understand you in a better way. Edit and revise. When you are going or develop, when you are going to write something and develop a piece of writing, you have to revise that piece of writing again and again and edit the irrelevant information and improve your expression and piece of writing. Okay. And read extensively. If you want to write effectively, you have to read and read and read for better expression. आप जितना पढ़ेंगे उतना ही आपकी writing skills develop होंगी. So these skills are essential for effective communication in English, both in everyday conversation and in professional settings. These 4 skills are interconnected and reinforce one another. For example, if a person is good at listening, he can speak effectively, and who reads extensively in English is more likely to have wider vocabulary and be able to write well. In this video, we have explored different important points regarding these 4 skills and how you can improve them. So I hope that you have better understanding of how to develop and strengthen your English language skills for effective communication. In the next video, I will explain the listening skill or listening comprehension strategies for your reference. So keep watching ELT streaming. Till then, bye, and don't forget to subscribe my channel and like my videos. And I am very happy if you will write a single comment regarding these current videos. Thank you. Allah Hafiz.